Good morning, students. We are doing our chapter plan development. In the previous session, we have discussed the future of Indian economy and what type of economy India adopted after the independence. And we have discussed that we adopted a mixed economy, a structure of mixed economy after independence. And we have discussed certain features of the Indian economy that the tertiary sector or service sector contribute maximum to the Indian economy. We have discussed all these things, and today we start the main topic of this chapter. Like first one is the Niti Aayog. In the previous session, we have discussed about the Planning Commission. Planning Commission was appointed on 15th of March 1950. प्लानिंग कमीशन को हमने कब अपॉइंट किया था? 15th of March 1950 को वी हैव अपॉइंटेड अ प्लानिंग कमीशन. एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का रोल क्या था? टू मेक द स्ट्रेटजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करना, आउटलाइंस तैयार करना, ब्रॉडर गाइडलाइंस को फ्रेमवर्क करना. दैट वाज द मेन रोल ऑफ द प्लानिंग कमीशन. एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. प्राइम मिनिस्टर थे वो उसके चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के. एंड इट हैज़ अनदर डिप्टी चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स इन द प्लानिंग कमीशन. And it was planning commission who brought the 5-year plan in India. We have taken the concept of 5-year plan from USSR economy, जहाँ से हमने concept लिया था 5-year plan का, और we have adopted the concept of 5-year plan. But in 2015, Modi government, the present government, dissolved the planning commission and replaced it by the नीति आयोग. जो हमारी current government है, जो मोदी government है, उन्होंने planning commission को which was appointed on 15th of March 1950 was dissolved by the present government and replaced by the Niti Aayog. So in this we will discuss about the Niti Aayog. What is Niti Aayog? Niti Aayog is basically replace the planning commission, so it has almost same function as the planning commission. जो planning commission के function है वही क्या है? नीति आयोग के भी same functions हैं, almost same function. Niti Aayog was constituted in place of the Planning Commission on 1st January 1950. In the very first line, we can say that Niti Aayog replaced the Planning Commission on 1st January 2015, basically, with the objective of providing the necessary and technical advice to the Union government regarding policy making at the center and state level. And what is the main function of the Niti Aayog? जो मेन फंक्शन है नीति आयोग का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, दैट इज़ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल. सो ये क्या करते हैं? नीति आयोग असिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं इन मेकिंग और फ्रेमिंग द पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नीति आयोग assist the union government in framing the policies. This is the main objective of the Niti Aayog. So again, in planning commission, who was the chairman of planning commission? Prime Minister was the chairman of planning commission. Same here, the Prime Minister of India is the ex officio chairman of Niti Aayog. No change in this designation. Prime Minister जो थे वो प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन थे. अगेन हेयर इन नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर इज द main person, or we can say chairman of the Niti Aayog, and he appoints the vice chairperson of Niti Aayog. And then there is a vice chairperson of Niti Aayog who was appointed by the prime minister. कौन उसको करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं. The first vice chairperson of Niti Aayog was Arvind Pangaria. So here it is very important for the GS point of view. When Niti Aayog was established on 1st January 2015, Niti Aayog replaced Planning Commission. Who is the chairman of Niti Aayog? Prime Minister is the chairman of Niti Aayog. And a more important question is, who was the first vice chairperson of the Niti Aayog? So Arvind Pangaria was the first vice president, and Dr. Rajiv Kumar is the current vice chairperson of Niti Aayog. So current में कौन है? Dr. Rajiv Kumar is the current vice chairperson of Niti Aayog. And who is the chairperson of Niti Aayog? Prime Minister is the chairperson of the Niti Aayog. Indian economy is a mixed economy. As we have discussed that Indian economy is a mixed economy. From the beginning we have adopted the model of concept of mixed economy. Private plus public sector both contribute to the Indian
economy, combination of public and private sector. Currently, India is considered as one of the most developing economy of the world because of its nature. So we are the most developing country of the world nowadays. That every country, the developed country, they want business share in India. You can see around India, आप देखेंगे तो बहुत सारी MNCs in last 20 years हमारी country में whether they are related to software, automobile, pharmaceutical and different sectors of business. We have lot of MNCs in our country which are providing employment to our people and contributing in our GDP also. Part of agriculture in total GDP is decreasing, part of service sector is increasing again. When we got independence, at that time we are the agriculture based country. The primary sector was contributing more to the economy that time, but now today, if we talk today, that which sector is contributing more, service sector is increasing, or contribution of tertiary sector is increasing in the GDP on year to year basis. In your economics, you have read about the three sectors of economy: the primary sector, the secondary sector, and the third one is the tertiary sector, which is also known as the service sector. So when we got independence, उस टाइम पे हम क्या थे? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थे. 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी का जो सोर्स था, दैट वाज द एग्रीकल्चर. बट इफ वी टॉक टुडे, which sector is contributing more to the GDP, which sector is contributing more to the Indian economy? That is the service sector, that is the tertiary sector. Now we talk about the planning commission. क्या था planning commission, or what are the various functions of planning commission? But planning commission is now replaced by Niti Aayog. The planning commission was set up in March 1950. In fact, 15th of March 1950, first time planning commission was set up. The chairman of the planning commission is PM. Chairman of the Niti Aayog is also PM. India adopted 5-year plan from USSR. जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ that we have taken the concept of 5-year plan from the USSR. हमने USSR से 5-year plan जो है वो लिया था to develop our economy. The government of India prepares a document that has a plan for all its income and expenditure for next years. So basically, what is 5-year plan? 5-year plan, basically a plan for the next 5 years. In the next 5 years, what we are going to do, in which sector we will focus more, किस सेक्टर में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और किस सेक्टर को हम सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे. दैट इज़ ऑल अबाउट द 5-year plan विच वी हैव टेकन फ्रॉम द USSR. सो दिस इज़ बेसिकली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. कब प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ? 15th of March 1950. चेयरपर्सन, or you can say the chairman or chairperson, prime minister. And what was the role of the planning commission? The main objective, main function of the planning commission to assist the union government in framing the 5-year plans. जो 5-year plans हैं हमारे, उनको फ्रेम करने में जो है असिस्ट करना है किसको? यूनियन गवर्नमेंट को. The budget of the central and all state government is divided into two parts. So budget, we divide the budget into two parts. One is the non-plan budget and the plan budget. Non-plan budget, that is spent on routine items on a yearly basis. That is non-plan budget. Planned budget, that is spent on a 5-year basis as per the priorities fixed by the plan. So according to planning commission, we divided our budget into two parts. One is the non-planned budget. Non-planned budget, simple, your daily expenditure. Your daily expenditure. For just try to understand with the example, like हमारी डेली लाइफ में भी हमारे दो बजट होते हैं, एक प्लान बजट है, एक नॉन प्लान बजट है. नॉन प्लान बजट वो है जो डेली लाइफ में हमारे जो एक्सपेंडिचर, जो स्मॉल एक्सपेंडिचर्स होते रहते हैं, जिनकी हमें नहीं पता कि भाई कभी ना कभी वो अपने आप ही मतलब
हमें उनके लिए स्पेंड करना पड़ता है। एंड प्लान बजट वो है दैट आवर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, जिसके लिए हम जो है सेव कर रहे हैं, दैट इज़ आवर प्लान बजट। सपोज आई वांट टू बाय ए होम, मुझे एक घर खरीदना है आफ्टर 5 ईयर्स, सो आई हैव टू स्टार्ट द प्लानिंग फ्रॉम टुडे। मैं आज से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट करूँगा। ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ माई अर्निंग्स जो है मैं वो सेव करता जाऊँगा फॉर माई हाउस, दैट इज़ प्लान बजट। एंड नॉन प्लान बजट, मैं घर आया, घर आके पता चला कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो घर के ख़त्म हो गए हैं, और कल तक मुझे पता नहीं था लेकिन आज पता चला कि वो ख़त्म हो गए, तो वो मुझे ख़रीदने पड़ेंगे। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई नॉन प्लान बजट। सेम इन इंडिया नॉन प्लान बजट दैट इज़ स्पेंड ऑन रूटीन आइटम्स ऑफ ईयरली बेसिस। मीन्स उसका जो टेन्योर होता है नॉन प्लान बजट का, वो क्या होता है, ईयरली बेसिस होता है हमारा। प्लान बजट दैट इज स्पेंड ऑन अ 5 ईयर बेसिस। प्लान बजट क्या था, जो हम 5 ईयर प्लान्स के लिए जो बजट हम रिकमेंड करते थे, दैट दिस बजट वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, दैट इज अवर प्लान बजट। So, what was the main role of Planning Commission? The Planning Commission was appointed to frame the 5-year plans. Is it clear to you? So 5-year plans, and what we have taken the concept of 5-year plans from USSR. So first 5-year plan, we will discuss about the first 5-year plan here. First 5-year plan was set up from 1951 to 56. जो first 5-year plan का जो tenure था, that was from 1951 to 56. K.N. Raj, a young economist involved in drafting the plan. Who was behind the first 5-year plan? K.N. Raj, a young economist, was behind the first 5-year plan. जो पहला हमारा 5-year plan था, उसके पीछे जो पर्सन थे, जो पर्सनैलिटी थे, वो कौन थे? K.N. राज थे, जिन्होंने इस पूरे 5-year plan में जो है अपने एक्सपीरियंस और इनपुट्स दिए थे। इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग, जिन्होंने इनको ड्राफ्ट किया था बेसिकली फर्स्ट। आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड hasten slowly for the first 2 decades as fast rate of development might endanger democracy। तो उन्होंने सिंपली कहा था कि हमें जो है बहुत ही मीन्स सोच समझकर और स्लोली जो है हमें जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिकॉज अगर हम एकदम से फास्ट रैपिड डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे तो उससे हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल है विच वी हैव अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको कहीं ना कहीं खतरा है। बेसिकली उन्होंने जो है एक साइन दिया था कि फर्स्ट 5-year प्लान में मीन्स फर्स्ट 2 जो डेकेड्स हैं, आने वाले जो 20 साल हैं, उसमें हम ज़्यादातर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो हम कहाँ रखेंगे? गवर्नमेंट के पास ही रखेंगे, सो दैट जो हमारा जो डेमोक्रेटिक मॉडल है विच वी हैव अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सेफ रहे। सो हु वाज द पर्सन बिहाइंड द फर्स्ट 5-year प्लान? K.N. Raj, a young economist, was behind the first 5-year plan. He drafted the first 5-year plan. First 5-year plan addressed mainly on agriculture. So what was the main focus of the first 5-year plan? जो first 5-year plan था वो किसके ऊपर फोकस था? That was focused on agriculture. जो मेन सेक्टर था फर्स्ट 5-year प्लान का जिसको हमें डेवलप करना था, दैट वाज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सो दैट वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान। इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन, like in your 9th class in your economics you have read about the high yielding seeds, HYC, high yielding seeds were introduced during this time. Green revolution, white revolution were introduced during the first 5-year plan to make our country self-sufficient in agriculture sector. Huge allocations were made for the large scale projects like Bhakra Nangal Dam. So basically जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना था। हमारा फर्स्ट 5-year प्लान का जो बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। एंड फॉर दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए थे, लाइक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नंगल डैम फॉर द इरीगेशन, फॉर द
like high yielding wheat seeds for more production. It focused on land reforms as the key to the country's development. और लैंड रिफॉर्म्स भी इस टाइम पे जो है बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. लाइक जो एक जमींदारी प्रथा हमारी कंट्री में जो है काफ़ी टाइम से जो चली आ रही थी उसको जो है अबॉलिश किया था. और द पर्सन हु वर वर्किंग ऑन द फील्ड्स उनको वो जो है फील्ड्स जो है वो अलोकेट कर दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सो दैट दे कैन अर्न फ्रॉम देयर. So the first 5 year plan was based on agriculture. Then we have second 5 year plan. The second 5 year plan was set up from 1956 to 61. That was the second 5 year plan. It was mainly focused on heavy industries, where first 5 year plan was based on agriculture. The second 5 year plan was based on the heavy industry. Now it's time to boost up the heavy industries in our country under the leadership of P.C. Mahalanobis. So who was the person behind the second 5 year plan? P.C. Mahalanobis was the person behind the second 5 year plan. Development should be fast. What was the main objective of the second 5 year plan? Development should be fast. To set up heavy industries like electricity, railway, steel, machinery and communication. This was the main objective of the second 5 year plan. So student, this syllabus is as per the new contents of this coming year. So this is 5 year plan. First 5 year plan was based on agriculture. Second 5 year plan was based on heavy industries. Then we will discuss the current or we can say the 12th 5 year plan, because after इसके बाद क्या हुआ था, नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन और जो है 5 year plans जो है वो अब नहीं रहे. द कंसेप्ट ऑफ 5 year plan is no more in our country because नीति आयोग is there. So here we discuss of 12th 5 year plan 2012 to 2017. Its main theme is faster, sustainable and more inclusive growth. The growth target of the plan is 8 to 9% of GDP. Thus, notwithstanding the primary aim of all the successive 5 year plan being economic development, mainly increased productivity and provision of adequate income, along with social justice. Due importance was given to social aims like provision of education. So these are the main objective of our 12th 5 year plan. Provision of एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इनके ऊपर जो है हमने ज़्यादा फोकस किया किसमें 12th 5 ईयर प्लान में. एंड द नेक्स्ट वन वाज टारगेट टू प्लान 8 to 9% ऑफ जीडीपी. 8 to 9% हमें जो है अपने जीडीपी को जो है वो कहाँ तक बूस्टअप करना है, 8 to 9% जो है हमें जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट. दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स टॉपिक. आप अच्छे से आई थिंक द स्टूडेंट हु आर हैविंग इकोनॉमिक्स उनको अच्छे से इसका कंसेप्ट का पता होगा, जीडीपी एंड कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या उसको फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जीडीपी को. सो here we are discussing the 12th 5 year plan. What is the tenure of the 12th 5 year plan? 2012 to 2017 was the tenure of 12th 5 year plan, and the first main objective of the 12th 5 year plan was 8 to 9% of GDP. And then along with the economic development, it also has social development. It also have some social development programs like social aims. It also have like provision of education, social security and social welfare schemes. So dear students, this is all about the 5 year plans under the planning commission, which was established on 15th of March 1950. So go through the PPT and read your NCERT chapter also to get more detail about this chapter. These topics are according to your new syllabus which we are discussing right now. So you have to focus on Niti Aayog, you have to focus on Planning Commission, you have to focus on National Development Council, which we are going to cover in the next session of this chapter.
So this is for today's students. Go through the video, take your doubts, and if you have any doubt, take it. So thank you, students. Have a nice day. Take your doubts, students, if you have any.